Hello everyone, I am Shweta Goyal. Welcome back to my channel Easynomics. I am really very sorry for being inactive from past 2 months, but I am completely free for making video for all of you. So in today's video, I am going to share my strategy, my book list, which worked for me, and from the next class, like from the next weekend, I'll be sharing the video on the Cobb Douglas production function, which also one of you have requested me to make a video on Cobb Douglas production function. So yeah, my next video will be on Cobb Douglas, but in today's video let's have a look what all books which I referred for Indian Economic Service examination. So yeah, let's get started. I have an information for all of you. Notification for Indian Economic Services of 2021 is already out. You can go and fill the form, but they have released only 15 vacancies for Indian Economic Services and 11 vacancies for Indian Statistical Services. Exam were supposed to happen in July, but right now UPSC has postponed all of its exam and ongoing interviews, so I don't think it will happen in July, but maybe in August or September. So you have 3-4 months. You can prepare for that. Anyone having post graduation degree can apply in economics, can apply for these vacancies. It's free of cost for the girls candidate, and 21 to 30 years is the minimum like age criteria. There is no number of attempt here, but you must lie in the age bracket of 21 to 30 years. So there was little information which I was having for all of you. Now coming to the strategy and book list, I would say that first of all, if you really want to clear this exam, then download all the previous year papers. कम से कम 5 साल के तो you have to download. Without previous year, like I was having 10 to 15 days to prepare for this exam. What I did, I downloaded previous year papers first, 5 years. I have gone through the papers. I have noted down the topics. I have listed the topics which they asked, because उनके कुछ set topics हैं जिन पे वो हर बार questions पूछते हैं. So I listed them all, and फिर मैंने उन्हीं को prepare किया because मेरे पास कम time था. So आप सबसे पहले सब लोग क्या करोगे, सबसे पहले you go and download 5-year paper from the UPSC website. Okay, after doing this, now let's move to the paper wise. सबसे पहले we have the general English paper and general studies paper. These two papers are of 100 marks each. You will be getting 3 hours each for every paper, and there is a separate passing or minimum eligibility marks you should score in these two papers. ऐसा नहीं है आप इन 4 पेपर में बहुत सारे मार्क्स ले आओ, इसमें आपके 10-20 नंबर आए तो आप पास नहीं करोगे. इसमें आप इन दोनों में आपको अलग से पास होना बहुत ज़रूरी है. सो येस, डोंट इग्नोर, ये दोनों पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है. Now let's discuss in general English. I think the main factor is essay. Essay आपको decide करता है कि आपको कितने marks मिलेंगे. Now there are 2-3 topics which UPSC asked almost every year. For example, human development, environment, women, health. So basically there are 2-3 topics. जब आप 5 साल के पेपर डाउनलोड करके you will go through them, you will find out there are 4 to 5 topics, जिसमें से 1-2 टॉपिक हर साल आते हैं. तो आप क्या करोगे, उन टॉपिक्स पे you will prepare your own content to write an essay over that. This is the best strategy for an essay. अब तुम्हें 3 घंटे मिलते हैं. फॉर हाफ एन आवर यू विल स्ट्रक्चर, यू विल फ्रेम योर एसे, हाउ यू आर गोइंग टू राइट द होल एसे. देन फॉर 1 hour you will, for the full 1 hour you devote to writing an essay. After 1.5 hour will over, उसके बाद आप अपनी grammar, precise writing you can follow on that. So this was my strategy for English. I prepare content on some common topics, and newspaper help me to for the grammatical part, idioms, phrases, grammar portion. So this was my strategy. Now coming to the general studies, we have 4 subjects under general studies paper: history, polity, economics, geography and environment. Each of them contains equal marks. I guess 20 marks होते हैं या 25 marks होते हैं. 25 मार्क्स होते हैं हर एक सब्जेक्ट के. 5 मार्क का एक क्वेश्चन होता है. 5 क्वेश्चंस होते हैं हर सब्जेक्ट से. फॉर हिस्ट्री
मॉडर्न के लिए आई रेफर्ड स्पेक्ट्रम एंड एनसीईआरटी मैंने रेफ़र करी थी फॉर एंशियंट मिडीवल एंड आर्ट एंड कल्चर. फॉर पॉलिटी लक्ष्मीकांत इज़ द ओनली वन बुक, यू हैव टू रीड इट. For economics, I referred only current affairs because technical चीज़ें they are going to ask in the rest 4 papers. Here in economics they are going to ask only current affairs question. Then geography and environment refer 11th 12th NCERT. So these were the basic. And even if you are not able to complete your paper, like अगर आप 80-90 नंबर का भी करके आते हो, that's okay. आपको पास होने के लिए 30-35 नंबर चाहिए. अगर आप 40-50-50-60 ले आते हो, दैट्स वेरी गुड. ट्राई टू एक्सट्रैक्ट एज मच मार्क्स एज यू कैन, बिकॉज इकोनॉमिक्स वालों का ये पोर्शन वीक होता है, आपका स्ट्रॉन्ग है, आप इसमें बहुत अच्छे मार्क्स ले सकते हो. ठीक है. सो बेसिकली दिस वॉज अबाउट जनरल इंग्लिश एंड जनरल स्टडीज़. नाउ कमिंग टू दी जनरल इकोनॉमिक्स 1, आई विल डिवाइड दिस इंटू 3 सब्जेक्ट: माइक्रो इकोनॉमिक्स, इकोट्रिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स. फॉर इकोनोमेट्रिक्स रेफर गुजराती, ग्रेजुएशन में पढ़ी होगी. इसमें से चैप्टर 2, 3, 4, 8, 9, 10, इसमें से ये चैप्टर करके जाना, अच्छे से समझ के पढ़ना. दिस इज़ गोइंग टू बी योर हेल्पफुल फ्रॉम दैट. फॉर स्टैटिस्टिक्स इधर रेफर द बुक ऑफ चियांग की बुक या फिर SC गुप्ता की बुक, इनमें से कोई भी एक बुक रेफ़र करना. फॉर माइक्रो का थ्योरेटिकल पार्ट रेफर HL आहूजा टू क्लियर योर बेसिक कॉन्सेप्ट. एंड फॉर द मैथमेटिक्स पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स रेफर स्नाइडर एंड निकोलसन. स्नाइडर एंड निकोलसन की जो बुक है उसमें दे हैव द बॉक्सेस. In the boxes they have explained one numerical example. So basically that numerical example is going to help you. You don't need to read the entire book, just go through the boxes of Snyder and Nicholson. उसमें mathematical के questions हैं, formulas है, just do that. You will be able to solve microeconomics question in the main examination. After doing that, solve previous year papers. You will get to know कि तुम्हें कितना solve हो रहा है, नहीं होता है. Then look for the advanced book. Okay, so this is the basic. Now moving to the general economics 2. I again divide this paper into 3 sections: macroeconomics, international economics, growth and development. For the macroeconomics, read Freund. Freund से आपके basic concepts clear होंगे. Read Freund. Once you are done with the Freund, solve previous year papers. If you are not able to solve any question, then for that particular topic refer Ahuja. Otherwise, I won't suggest you to go to the Ahuja. Then the second thing, for international economics refer Salvatore. Salvatore is the only book, you have to read it. There is no other option for the international economics. For growth and development, there are models given in the syllabus. Keep syllabus with you. Go with the syllabus. There is no specific book you need to cover. You need to complete the syllabus. So उसके अंदर जितने भी models हैं, सोलो, हैरोडोमर, रोमर, ल्यूइस etc., या तो आप उन्हें इंटरनेट से कर लो. अदरवाइज there is a book Snowden. This is very good book. Thirwal also a book. Debraj Day is also another book. So basically you can refer any of them. You can refer internet also. You can refer your graduation book also. So this is as per your choice. Now moving to the paper 3. Now paper 3 we have public finance, environmental eco and planning. For public finance, HL Bhatia or Musgrave and Musgrave. These are 2 books, but I won't suggest you to read the entire book. There are only 2-3 chapters relevant here जो आपको इसमें से पढ़ने हैं. और वो आपको कैसे पता चलेगा कौन से पढ़ने हैं? फ्रॉम प्रीवियस ईयर पेपर्स. प्रीवियस ईयर पेपर देखो, टॉपिक्स नोट डाउन करो, उनको बुक से कवर कर लो. इनके अलावा और आपको कुछ भी नहीं करना है. अदरवाइज सिलेबस उठाओ, सिलेबस में जो जो पॉइंट्स लिखे हैं बस वो पॉइंट्स जाके बुक खोलो, वहाँ से कंप्लीट करो एंड देन यू आर डन. यू डोंट नीड टू रीड द एंटायर बुक. दीज आर 2 bulky books and it will be wasteful. You are going to waste your time if you will read the entire book here. For the environmental economics, I referred the IGNOU material of my masters. You can also refer your graduation environmental economics book which you were having in either 5th or 6th semester. So you can refer that, or you can cover it from internet also. So basically third is planning. Do it from current year or current affairs, or basically just try to solve all the previous year questions because they repeat their questions. Now moving to the paper 4, basically which covers the Indian economy section. See,
in Indian economy they have sections: inflation, stock market, labor market, then planning, etc. So basically तुम्हें क्या करना है, जो जो सेक्शन गिवन है ना, फॉर एग्जांपल इन्फ्लेशन गिवन है, लेबर मार्केट, उस चीज़ पे उस करंट ईयर में क्या करंट अफेयर का कुछ हुआ है. फॉर एग्जाम्पल लेबर लॉ, एक लेबर मार्केट एक इनका सेक्शन है पेपर 4 में, और इस साल लेबर लॉज इम्प्लीमेंट हुए हैं. तो दे आस्क्ड अबाउट लेबर लॉज, दे आस्क्ड अबाउट एग्रीकल्चर लॉ, दे आस्क्ड अबाउट आरबीआई क्या क्या स्टेप्स ले रही है स्लो डाउन के चक्कर में, कोविड का क्या इम्पैक्ट रहा इकोनॉमी में. तो मेरे को ऐसा लगता है इंडियन इकोनॉमी इज़ मोर ऑफ अ करंट अफेयर part. So basically what you can do, you can read economic survey, you can read budget, you can read newspapers, and you can read any magazine which economics magazine which basically the institute or coaching provides for the civil services student. That is going to help you here to cover the entire economic section. So basically this is going to cover your paper 4. So basically after completing the discussion of the book list, I would say that previous year question paper, your syllabus, and your internet, if you have if you have these 3 things now, I think you don't need any book. You can cover from the internet entirely, ऐसा मुझे लगता है. So don't run for any book, just pick up the syllabus, pick up the previous year question में से तुम अपने सब टॉपिक्स को लिस्ट करो, उस टॉपिक्स को सिलेबस से मैच करो, वो लोग क्या क्या पूछते हैं, जो कभी नहीं पूछा उसको कट कर दो, जो पूछा है उनको लिख के या तो तुम इंटरनेट से पढ़ लो, या मेरी बताई हुई बुक से पढ़ लो, या फिर आपने ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन में बुक्स में पढ़ा होगा कोई ना कोई टॉपिक कभी ना कभी, तो वहाँ से पढ़ लो. देयर इज़ नो नीड टू फॉलो मी एंटायरली. इफ़ यू आर फेसिंग प्रॉब्लम इन इकोनोमेट्रिक्स देन गो विद माई सजेशन. इफ़ यू आर कन्फ्यूज्ड विद द एनवायरमेंटल इको, गो विद माई सजेशन. देर इज़ नो नीड कि आप मुझे ब्लाइंडली फॉलो करो. दिस वर्कड फॉर मी डजेंट मीन दैट दिस इज गोइंग टू वर्क फॉर यू ऑल्सो. सो दिस इज़ माई स्ट्रैटेजी विच वर्कड फॉर मी. स्टिल मेरा भी रिजल्ट बाकी है इंटरव्यू का, तो लेट्स सी क्या होता है. बट टिल देन आई विश यू ऑल लक to prepare for this 2021 notification. If you have any doubt, any query related to the strategy, related to the question, you can always ask me in the comment section. And one of you also wanted to connect me, so yes, you can always connect me in the internet, in the comment section, and I would like to connect you further also if required. So yeah, thank you. If you really like the video and if you love the content, then please hit my subscribe button and share my channel as much as you can. And yes, do like the video. Till then, stay home, stay safe, have a nice day. Thank you.